A very good morning. Welcome to the class. नाबार्ड के पहले क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है. Welcome to the first class of NABARD, and so we are going to start ARD today. Very good morning everyone. Good morning Dipanshu, Divya, Krishna, Gautam, Nandini. Welcome to the session. Good morning Ipshita, Saurav. So सबसे पहले I want to know कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं. I mean बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग एग्रीकल्चर महापैक में ऑलरेडी कोई दूसरे क्लासेस में एनरोल किए होंगे. सो आई वांट टू नो कि कितने स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड के लिए एनरोल किया है. वेरी गुड मॉर्निंग पलक, आनंद, नंदिता, ऋतु, आकांक्षा, गरिमा. वेलकम टू द सेशन. आई एम अ फ्रेशर. ओके, ग्रेट. आई एम न्यू. ओके, गुड. वेरी गुड मॉर्निंग श्रुति. वेलकम टू द सेशन. Okay, that's great. I am new. Okay. So anyone, any idea? Do you have any idea about NABARD exam? No, sir. Okay. Very good morning, Saurav. Welcome to the session. So NABARD and language. So is there anyone who is not comfortable with English, और यहाँ पर कोई है जो अंग्रेजी नहीं समझता है, या फिर is there anyone who is not comfortable in Hindi, or doesn't matter, both the languages will work? Doesn't matter. Great. Okay. Okay, great. So see guys, in NABARD, from last year the syllabus was changed. Okay, and before that there was no basically there was no decision making and all. Okay, but from the last year, maths, English, reasoning, everything was added, and there was a merit section, and now there is a qualifying section. Okay, so in this merit section, I'll just give you a small overview of these. Okay, so in this merit section, you have ESI, ARD, and GA. Okay, and these will decide if you will be appearing for the phase 2 or not. ये आपका sir, I am from Kerala, but I can understand Hindi. Very good morning, Joshma. Welcome to the session. Okay. Very good morning, Ritu. Welcome to the session. Okay. So अगर मैं यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट्स की बात करूँ, okay, ARD, ESI and GA, then these are the subjects that will help you to qualify phase 1. Okay, but again you need to clear the cutoff of phase 1 also. Sorry, the qualifying subjects also. Okay, और रही बात phase 2 के descriptive की, just a minute. Okay, so phase 1, here you have GA, ARD and ESI. Okay, for all the students, classes will be same for both phase 1 and phase 2. Okay, classes दोनों के लिए same रहेगा, लेकिन but there is a catch here. So catch is, for phase 1 you are going to study in a way which will help you in attempting the MCQ questions. लेकिन phase 2 में क्या होता है ना कि आपको descriptive questions लिखना है. Okay, और उस descriptive questions के लिए again you should know the way of writing. Okay, the content that you are going to study here will be the same for phase 2. ओके, कंटेंट यहाँ पे पूरा सेम रहेगा. जो ARD और ESI आप अभी पढ़ोगे वही ARD और ESI आपको फेज 2 में भी पढ़ना है. लेकिन जो मेजर डिफरेंस यहाँ पे है वो ये है कि आपको जो फेज 2 में ARD और ESI है उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे. जैसे कि मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर जो बैच था उसमें 2 जनरल के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, एक agriculture का student. Okay, it was the first time we conducted a NABARD batch. Okay, and उसमें basically 3 students यहाँ पे select हुए थे, and उन तीनों की अगर मैं बात करूँ, okay, so again agriculture student का phase 2 अलग था, but जो general student थे ना उनका phase 2 was the same ones as phase 1. Okay, so यहाँ पर अगर मैं phase 2 की बात करूँ, so in case of phase 2 you should know the way to write. Okay, way to write. अभी ये कौन बताएगा?
are we going to tell you the way to write? Yes, we will be going to tell you. Okay, especially you will learn this thing from Udisha ma'am in the English descriptive class. Okay, Udisha ma'am will be teaching you the English descriptive class, and there you will learn this way of writing the answers. Okay, let me give you an example of let's take an example of ARD. There is a subject that is known as forestry. Okay, so last time there was a question, what is social about social for forestry? Again from ARD and ESI also, let me tell you, there will be such topics which will be common to both ARD and ESI. For example, MSP, okay, minimum support prices. Now this minimum support prices is common to both ARD and ESI, okay. So likewise, you will be having the questions. So all the questions from ARD and ESI will be you cannot exactly differentiate this is ESI's question, this is ARD question. Yeah, ARD question you can differentiate, but you cannot say that this particular question is only from the ESI part because it will be kind of a common question. Okay, good morning Shruti. Sir, इस बार agriculture part नहीं है. ऋतु फेज 2 में एग्रीकल्चर इस बार नहीं है. ओके, फेज 2 में इस बार एग्रीकल्चर नहीं है का मतलब ये है ऋतु कि फेज 2 में जो आप एग्रीकल्चर से भरते थे और एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ते थे वो तो नहीं है. Guys, post is assistant manager. Okay, the post is same for everyone. The only difference is how you enter into the organization. You enter from an agriculture background, you enter from a general background. That is the only thing that matters. And in fact, after entering into the organization, that is something that won't matter here. ओके, गुड मॉर्निंग नेहा, वेलकम टू द सेशन. जनरली है ना? हाँ, बस जनरली है. जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या तो आपको जनरल से ही भरना है, ठीक है, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज अगेन आपको आपके पास जो एआरडी का सब्जेक्ट है ना वो आप पढ़ोगे, वो जनरल स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे. ओके, सो वहां पर फिर भी एक एग्रीकल्चर का जो है 40 क्वेश्चंस रहता है, सो डोंट वरी. ओके सर, आई एम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट. सो श्रुति, अगर आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो देन ऑब्वियसली आपका जो फेज 2, अगर आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से फॉर्म भरा है देन your phase 2 you can give the exam from agricultural engineering. Guys, let me clarify something. This batch is for them who have applied for general, the phase 1 and phase 2. Okay, now the students who have applied through a specific stream like ABM or finance or IT or might be agricultural engineering, forestry, horticulture, for you this batch will only matter when you will be writing your phase 1 and the descriptive English portion. Okay, and for others this batch will be of help for both the exams, that is phase 1 and phase 2. Okay, सर आपने फिशरीज का देखा था क्या? हाँ मिनल, देखा तो था. फिशरीज तो सेम ही है, मतलब लास्ट ईयर का एज इट इज. ओके, कुछ चेंजेस उसमें है नहीं. ओके, वही पोर्शन है जो सिलेबस है आपका, वो वही है. ओके, नो चेंजेस. सर फेज 2 में एआरडी एंड ईएसआई है ना? यस राहुल, फेज 2 में एआरडी, ईएसआई एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. ओके, और बाकी जो स्पेसिफिक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आएगा प्लस आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर आएगा. ओके सर, आई एम एन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट. ओके आनंद. ओके सर, फेज 2 में हिंदी लैंग्वेज में आंसर लिखा जा सकता है? यस. अगेन व्हाइल राइटिंग द आंसर्स इन फेज 2, फर्स्ट थिंग इज you have to type the answers. So guys, make sure just open any kind of typing application, download any typing application or open any typing website and start practicing. Okay, now after knowing the way to write you should have a good typing speed also. Okay, so start typing from now itself because your phase 2 will be somewhere around October, I guess. Okay, it will be either in the first week of October or in the last or mid. It will be in the October most probably because generally NABARD gives a gap of 30 to 45 days. 45 days you can take on an average. Okay, so you should have a good typing speed because यहाँ पे आपको पेन या पेपर से नहीं लिखना है. Please mind that. Okay, sir, details syllabus का PDF मिलेगा? Yes guys, today is the introduction class. Okay, so if you have any kind of doubt regarding the NABARD exam, about the PDF, about the batch timings and all, please get it clarified because from tomorrow we are going to start our dedicated topic. So make sure that from tomorrow you are not left with any kind of general doubts. Okay, you can ask your doubts from your
subject portion, okay, but make sure that all your general doubts are clarified today itself. Okay, so detailed syllabus ka PDF ka, Ipshita, detailed syllabus ka PDF for what? I mean, for what are you asking about the detailed syllabus? Phase 1, phase 2, क्या चाहिए, किसका किसका चाहिए? सर मैं जनरल से अप्लाई करूं तो ठीक ही रहेगा ना? हाँ मिनल, ठीक रहेगा यार, फिर भी तो आप एग्रीकल्चर पढ़ ही रहे हो ना, सो फिर भी ठीक ही रहेगा बोथ। ओके, सो फॉर द जनरल स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू आपको कैसे अपना सिलेबस मिलेगा। So go to Google, search NABARD, okay, open this, scroll down, no, here it is, career notices, scroll down, click here to continue, and here it is, syllabus for grade A 2022 mains examination paper 2. Okay, so see, we have agricultural marketing, agricultural business management, agricultural engineering. Okay, okay, so you see here it is, let me just zoom it. Okay, check. Okay, so this is the syllabus for agricultural engineering, and in all the syllabus you will find a statement, the syllabus is illustrative and not exhaustive. That means things can be added to it, it's not like this is the only thing that is going to be asked. Okay, next let's come back here. For example, this one, yeah, economic and social issues and agriculture and rural development. Now this is the syllabus that you need for both your phase 1 and phase 2 general students. Okay, general students, this is your ESI and ARD syllabus for phase 1 and phase 2. So if you don't have the syllabus, just wait, I will also share the syllabus with you. So I'll be uploading a handout, and you can see now you'll get a notification that handout received. Please download it. Sir, in qualify section, do we have to clear the separate cutoff? Yes, Garima, in qualifying section, you have to clear the individual cutoff. सर फेज 2 में सिलेबस चेंज होगा फॉर एग्रीकल्चर एंड ESI? नो रितु, देखिए गाइस, फेज 1 का ना, सबसे पहली बात, फेज 1 का कोई सिलेबस नहीं है। ओके, लेकिन होता क्या है कि फेज 1 के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो फेज 2 के बेसिस पर ही आते हैं। मतलब फेज 2 का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से यहाँ पे आपके फेज 1 के क्वेश्चंस आते हैं। सो फेज 1 का अलग से कोई भी सिलेबस नहीं है। हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे एज यूजुअल हर साल ऐसे ही पढ़ते हैं, हर जो आपका फेज 2 का सिलेबस है ना, उसी के हिसाब से पढ़ते हैं। ओके, सर आई एम एन IT इंजीनियर, सो मुझे जनरल से अप्लाई करना चाहिए और नॉट, या फिर कोई बैच मुझे ज्वाइन करना होगा? गौतम, देखिए IT के लिए कोई बैच नहीं है, ठीक है, एंड क्या कहते हैं, सो आप जनरल से अप्लाई करोगे तो यहाँ का जो क्लास है वो आपके फेज 1 फेज 2 दोनों में काम आएगा। ओके, बट जो अगर आप मान लो IT से अप्लाई करते हो तो आपका जो ये बैच है ना, ये आपके फेज 1 में काम आएगा और फेज 2 के इंग्लिश में काम आएगा। ठीक है, आपको फिर अपने IT वाले जो फेज 2 है ना, उसके लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। Okay, so then we have to manage our phase 2 exam ourselves, means we have to study ABM ourselves, or you'll help us? No, sort of this, then I cannot help you there. Okay, guys, this batch is only for the general students. That means the phase, whatever we are going to teach here, it was clearly mentioned, this is a generalist batch. There was no agriculture batch, there was no ABM batch, there was no fisheries batch, or there was no, there was IT and finance batch, but because there were not much students, only 1 or 2 students took the admission in that batch, so we just took the batch down. Okay, so that's why this batch will be beneficial for both the exam if you are applying from the general stream, but you are applying from a particular stream, then you have to you have to start studying for the phase 2 by yourself. Okay, next. Sir, I'm applying for general. Yeah, it's fine, it's completely fine. So what about the current affairs and government schemes? I will be dealing with that. Okay, sir, should we fill the NABARD application form already, or should we wait? No, Vishwas, what is the point of waiting? If you are confirmed about from what stream exactly you are going to fill your form, then please go ahead and fill the form. Okay,
If I miss the class, whether recorded one is available, yes, Purushottam. Whenever guys you will miss the class, within 24 hours, the recorded class will be uploaded. Okay, and whatever we will be studying in our class, that will also be uploaded as PDF. Okay, just a minute, please. Okay, that will also be uploaded as a PDF. Okay, and at the end of every class, okay, or at the start of the next class, I will be sharing the handouts also, so that you won't have any problem. Because sometimes what happens is some students say that, sir, the quality of the handouts provided in the application is not good. So in that case, I will be providing you the handouts from my side. Okay. Sir, current affairs, how many months we will have to cover? See, Utlanta, right? Utlanta. Now, see, you have to cover two kinds of current affairs here. One will be covered by Arusi ma'am in the GA section. Okay. So that will be basically, banking awareness and static and all. Okay. With in that you will be having some current affairs portion. Okay. So that portion will be basically covered by Arusi ma'am. Again, that will be for 6 months. Then you will be having again two types of, basically in NABARD you have to read three types of current affairs. Okay, second one is your ARD current affairs, that will be covered by me. Okay, third one is your ESI current affairs, that will be covered by Amanjot ma'am. Okay, so now these three current affairs you have to study for your NABARD grade A exam. Okay, it might sound a lot, but actually if you'll just go through the ARD current affair, then it's hardly 6 to 7 or 10 current affairs in released in every 3 to 4 days. Okay, so it's not exactly that much. Okay, even if you want to go through the classes early, then you can check the playlist on Agriculture Adda 24/7 YouTube channel. There is current affairs sessions from March till date. Okay, so you need to study from the 1st of March. Okay, don't you don't need to study from January or February. That will be more than enough for you. Okay, so you can do that. And schemes, roughly you have to study somewhere around 10 to 15 schemes, all the major schemes related to agriculture and rural development. Got it, guys? Sir, what about the study material? Shruti, we will be studying all the all the respective portions in this class. So guys, you will be having three classes of ARD. One is 7 to 8 in the morning. Okay, one will be 4 to 5 p.m. I guess. Other one will be 9 to 10 a.m. So you will be getting three faculties, three teachers for three different portions of the ARD. Okay, so I'll be dealing some, then Hina ma'am will be dealing some portions, and Meenakshi ma'am will be dealing some portions. Okay, so do we get PDFs for every current affairs? In this class, you will get the PDF for current affairs, not on YouTube. Okay, on YouTube, PDFs are not available because generally what happens is agriculture ARD current affairs are very less. Okay, hardly three current affairs, four. If I'll talk about today, then there are hardly four current affairs. Yesterday, for the last 3 days, there were only three current affairs. Okay, so like this, you don't have to cover a lot of current affairs like the general current affairs in ARD. Okay, it's selective. Okay, and you can go through the PIB website. Okay, if you are going through the PIB website and you are going through all the see, now you have to keep tab on some ministries like ministries of commerce, ministries of consumer affairs, ministry of agriculture, ministry of animal husbandry, dairying and fisheries, and ministry of panchayati raj and rural development. Now these are some of the ministries where you will get the current affairs related to ARD. Okay, so you can go through this. Even actually you don't need anyone's help in ARD current affairs, I would say, because going through PIB will be enough. Okay, yesterday on PIB there was an article about schemes. Okay, open PIB, go to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and see there will be one information on the schemes. And that is one of the, like, it's not a complete detail about the scheme. Okay, but still you can see all the important schemes listed out there. Okay, sir, mock test कब तक आएंगे? मॉक टेस्ट कब तक आएंगे? मतलब मॉक टेस्ट क्या मतलब आपने मॉक टेस्ट परचेज किया है? सर, मैंने मेरिट सेक्शन बैच में एनरोल किया है, सो फॉर अदर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स वाईटी क्लासेस इज इनफ. नेहा, थोड़ा सा अपने से भी पढ़ना पड़ेगा. ओके,
you have to make some self study. Do one thing, for other subjects, go to the main channel, that is adda247.com. Okay, you can follow reasoning class for reasoning class. You can follow Saurav sir's class for reasoning. You can follow Udisha ma'am or Santosh sir's class for English. Okay, then you can follow Navneet sir's class. Okay, or for maths. Okay, so go to the main channel, that is Adda 24/7. Okay, and go through some of those math, English, reasoning class. Decision making, Ashutosh sir's, Veer Ashutosh sir's class. Okay, so that portion is something you can go through on the Agriculture Adda 24/7 YouTube channel. Okay. Sir, we are having PYQ analysis. Yes, Sagar, we will be having PYQ analysis soon. Okay, I guess some of the teachers have already done their part. Okay, ESI or GA has been done. Okay, ARD, we will be doing the PYQ soon. Okay, pre-recruitment training करके कुछ था notification में last में, वो किसके लिए होता है? I guess those are some trainings for SC/ST students. Okay. And sir, for phase 2, what should be the typing speed? Now, Utlanda, see, there is not, you don't have any idea about the fixed typing speed, because generally what happens is whenever someone comes for NABARD grade A exam, either they are pro in typing or they are noob in typing. Now, what is a noob? Basically, these words are used in games when someone doesn't know a particular thing. Okay, so whenever someone is appearing the exam for first time, their typing speed might be decent or it might be even below decent. Okay, so for everyone, you are on a same ground. Okay, so if you start typing now, okay, do one thing, just go to Google, open, just search uh, practice typing online. Okay, just search anything like that. Okay, you'll get so many websites. Okay, start typing. Okay, and after 10 to 15 days, update me what is your typing speed, because we have time for phase 2. Okay, so I'll just give you advice based on your individual typing speed. Okay, any books that are to be used for preparation? Nandini, there are books, but the thing is, let's say agriculture, so if you want to complete the ARD of NABARD, then you have to purchase at least 6 to 7 books here. Okay, which is not feasible, and in each book you will be needing only hardly 15% or 10% of that book. Okay, so I don't exactly advise to purchase any book. If you can, but if you can get, or if you want, if you can purchase any kind of compiled material, if I'll I got some of NABARD's notes from one of my seniors during my college days. Okay, so NABARD and other exams notes. So if you can get that kind of notes from any senior or anyone, okay, then that will help. Or if you can just, if it's available, any kind of compiled notes, then you can also purchase to, boost up your preparation. Okay, I guess on adda247.com also you have some books and ebooks, you can check them out. Okay, will there be any test before phase 1 for practice? At the end of the class, I will be taking some ARD tests. Okay, now this test depends on your mentor. Okay, you can ask them. Regarding my part, I will be taking the test. Okay, पुरुषोत्तम प्लीज रिफ्रेश बिकॉज देर इज नो प्रॉब्लम फॉर माई एंड. ओके, ओबीसी के लिए भी था वहां, तो हाँ मतलब ओबीसी के लिए भी है, SC ST OBC तीनों के लिए है. ओके, यू कैन अवेल. ओके, if you want, you can avail the then this pre-recruitment training. Okay, my speed is 22 words per minute. देखो गौतम, do one thing. Okay, now you have to write 6 questions and you will have a time limit. Actually, I'm thinking of doing a webinar on that. Okay, when that webinar will be when we will be doing about doing that webinar on phase 2, I will be informing all of you. Okay, we can discuss about phase 2 in detail there, because yesterday also there were in yesterday's webinar there were so many students who were curious about phase 2 and interview. So we will be doing 2 more webinars. One is about phase 2 and one about interview, and we will be discussing in detail there about the typing speed and how should you write, which language should you prefer. Okay, because you can you have 2 languages here. You can either attempt the questions in English or you can either attempt the question in Hindi. Okay, so see, I know Hindi, I know English. Okay, it's fine. Maybe I am more comfortable in Hindi, but can I type in Hindi? See,
talking in Hindi and reading or studying a particular thing in Hindi is a bit different here. Okay, I can talk in Hindi. Okay, generally my whole day when I converse with someone, it's in Hindi, or very rarely in English. Okay, but when it comes to studies, I'm not that fluent in Hindi. Why? Because in studies there are so many technical words. Okay, so I don't know the technical words, the Hindi technical words. Okay, so now that is a difference here. So you know Hindi, but are you that fluent in Hindi that you should write the phase 2 in Hindi? There are some kind of questions that we'll discuss. ग्रामरली के साथ टाइपिंग करना चाहिए, कर सकते हो, क्यों नहीं सर? फेज 1 में करंट अफेयर्स सिलेबस दोनों से क्वेश्चन आते हैं. हाँ, हाँ, अगेन अनदर थिंग गाइस, फेज 1 में आपका जो सिलेबस है, ओके, इट विल बी लाइक 50-50. ओके, सो Ritu, I guess Ritu and Minal, okay, Ritu and Minal here were present in the last year's NABARD batch also. Okay, and I guess from 40 questions you had 36 questions from our classes, and in that 36 questions also there were some questions which were not most like 50-50. You can take a 50-50 ratio of current affairs and static agriculture. Okay, so that means 50 questions will be from the static part, and 50% questions can be from the current affair. Okay, so I would, why you won't say that sir only current. I have seen many people on YouTube saying that only current affair ARD and current affair ESI is fine. Then how come social? Last year there was a question from social forestry in phase 2. So how come social forestry comes under current affairs in ARD? It's not. Okay, many people on YouTube teaching for NABARD, they don't have expertise on the ARD part. Because see, now I have spent 6 years of my life studying agriculture. Okay, now exactly a person who hasn't studied agriculture and a person who has studied agriculture, the way of teaching, the way of interaction will be different. So most of the people, they are not exactly from agriculture background who are teaching ARD. Okay, so that's why there comes a difference. They prefer current affairs because teaching current affairs is a lot more easier than teaching the static part. Okay, so depending on that, just make sure that both are important. Static part is important as well as the current affairs part is important. Okay. Good morning, sir. I never studied from ebooks. How to study? Also, no print option is available. So, Mil, that is ebook. Okay, that is electronic book. Print option is not available. You can only open and read. So, सारे subjects mix दिखेंगे क्या एक ही बैच में? क्लास में AFO की तरह अलग अलग सब्जेक्ट का सेपरेटली बैच कर दीजिए. ससी सारे के सारे अलग ही दिखते हैं. Okay. Yeah, today is about intro class. Okay, we will start with our syllabus, but make sure that I'm making sure that none of your doubts is left out today. ओके सर, फेज 2 में ESI एंड ARD भी डिस्क्रिप्टिव होता है. जी हाँ ऋतु, फेज 2 में आपका ESI और ARD दोनों का डिस्क्रिप्टिव होगा. 6 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आएंगे. ओके सर जी, सब्जेक्ट वाइज नाबार्ड का बैच होगा क्या? ये सब्जेक्ट वाइज कुछ नहीं होगा शशि, जो आपका मतलब जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स है ना, लाइक मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, वैसे ही क्लासेस होंगे. ठीक है सर, मेरे पास कोई बुक्स नहीं है, बस आपके ऊपर भरोसा है. सो इस क्लास के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए क्या? और इस क्लास है क्रैक करने के लिए. बाय द वे, आई एम नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड. सुमंगल, क्लास के अलावा मैं आपको फिजिकल बुक्स खरीदने के लिए कभी नहीं बोलूंगा. ठीक है, देयर आर ई बुक्स, या फिर कहीं से अगर कंपाइल्ड मटेरियल आप खरीद सकते हो या फिर गैदर भी कर सकते हो ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर, देन यू कैन गो थ्रू. But yeah, at least for my portion, I assure it will be more than enough. Even ESI भी अमनजोत मैम is well experienced in ESI. Okay, तो I don't think कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यही दोनों आपका डिसाइड करेगा कि आप क्या करने वाले हो. गुड मॉर्निंग कुशाग्रा. Sorry, can you help us with the notes so that our vast syllabus can be less? I don't know what to study and from where, so please help us with the notes. सौरभ, जो आपको पढ़ना है वो तो मैं क्लास में कराऊंगा ही. ठीक है, आई विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर्स, द सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज. सो मेरे एंड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सर जी, करंट अफेयर्स डीपली पढ़ने की जरूरत है या डीपली क्या होता है? पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो. डीपली या हल्के में हल्का कुछ नहीं होता है. ठीक है गाइज, आप लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, आप में से कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे. एक चीज दिमाग में डाल लो, there is not a single teacher born who can exactly predict the exam.
ठीक है, और जो लोग एग्जाम प्रेडिक्ट करते हैं और बाद में उनका कहा हुआ चीज नहीं आता है, वही लोग फिर बाद में आपको दिखते नहीं है. ओके, एंड आई हेट प्रेडिक्टिंग एग्जाम्स. ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स ऐसे एग्जाम्स हैं आप मरते दम तक कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, नेवर एट ऑल. ठीक है, सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2017. ओके, 2017 से मैं टीचिंग कर रहा हूं एंड अभी तक कोई भी एग्जाम प्रेडिक्ट नहीं कर पाया मैं. ओके, इनफैक्ट एक बार प्रेडिक्ट किया था, वो थोड़ा सही हुआ, थोड़ा गलत हुआ, एंड दैट्स व्हाई आई हेट प्रेडिक्टिंग एग्जाम्स. यू कैन नॉट, ओके, एंड यू शुड नॉट इनफैक्ट. ओके, रादर यू शुड सी कि मेरा 100% तैयारी है या नहीं. अगर आपका 100% तैयारी है ना, बिलीव मी, दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो एग्जाम से पहले एक रात आता है ना, लाइक चिल होके सोना, वो आएगा तो आपको और अच्छा लगेगा. ठीक है, जब आपका 100% प्रिपरेशन नहीं होगा, देन यू विल थिंक कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है. ओके, sir, I'm this sufficient to clear as I'm. It will be sufficient. Don't worry, Sitaram. Sir, we have to prepare notes. I will be providing PDF. Don't worry. You can prepare your own notes if you want, but I'll be providing the PDF. Sir, non-merit section के लिए कट ऑफ रहता है, इस बारे में कुछ नहीं मिला. मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, मैं आपको एक दूसरे क्लास में बता दूंगा. सर शशि FCI का क्लास नहीं है, ये नाबार्ड का क्लास है. ओके, सौरभ, मेरे पास ABM का कोई भी नोट्स नहीं है. आई एम रियली सॉरी. मेरे पास एक नोट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है, पर मुझे देखना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में डिटेल में क्या है. ओके, so shall we start? Sir, for me current affair is difficult since I am giving NABARD exam for the first time and I am from non-agri background, so it will be very helpful if I will provide the relevant current affairs. Okay, चलो, so थोड़ा सा आज पढ़ें. Let's start NABARD introduction to agriculture. Okay, जस्ट अ मिनट प्लीज. बहुत ही बेसिक से पोर्शंस हैं. आज हम लोग विल बी गोइंग थ्रू कि यार एग्रीकल्चर क्या. एक्चुअली इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर में ज्यादा कुछ है नहीं. योर एक्चुअल क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो. सो टुडे इट्स लाइक कि हाँ, मतलब फॉर आज जस्ट अ मिनट प्लीज. So, introduction to agriculture. Now, what exactly is agriculture? Agriculture क्या है? Okay. So, agriculture की बात करेंगे तो guys, agriculture basically has been derived from two Latin words. One is your ager and the other one is your cultura. Okay. Now, what is ager and what is cultura? Ager means soil. Ager means soil and cultura means cultivation. Okay. So, whenever you start cultivating the soil, that is what we call agriculture. Now, why do we need to cultivate the soil? We need to cultivate the soil because we need to grow food. And why do we need to grow food? To meet the food security of our country. Okay. So agriculture can be defined as an art, a business, and a science of producing crops and livestock for economic purpose. अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बेसिकली खेती करना, फसल उगाना और पशुपालन करना. ओके, सो दीज आर द टू मेजर पोर्शंस. या तो आप क्रॉप उगा रहे हो या तो आप पशुपालन कर रहे हो. सो इन केस ऑफ लाइफ स्टॉक, इन केस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, each and everything you have, like buffaloes, cows, sheep, fisheries, each and everything, poultry farms, everything. Okay, so how exactly is it an art? ये एक आर्ट कैसे है? देखो, अगर आप एक गांव जाओगे और वहां पे अगर आप फार्मर से पूछोगे कि वो एग्रीकल्चर क्यों करते हैं या फिर एग्रीकल्चर का एक अगर पर्टिकुलर पोर्शन है, ठीक है, वो क्यों करते हैं, तो क्या यू विल गेट एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक रिप्लाई फ्रॉम हिम? हाँ, ठीक है दीपांशु. Yes, Somil, I will. No, right? So for a farmer, yeah, it's a way of life for them. It's a way, it's an art for them. ठीक है? अगर मैं एक फार्मर हूँ, ओके, तो फिर जनरली लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. ठीक है, हम लोग अगर कोई यहाँ पे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होगा, सो बेसिकली हम लोग लास्ट ईयर में, दैट मीन्स इन आवर फाइनल ईयर, हम 3 महीने के लिए
we literally live in villages. जिन्होंने अपना इंटर्नशिप सही से किया होगा, 3 महीने के लिए आपको विलेज में रहना पड़ता है. You will be assigned a farmer. ओके, और वो फार्मर सुबह से लेके शाम तक क्या क्या कर रहा है अपने फील्ड में आपको नोट बनाना पड़ता है, एंड यू हैव टू कीप अ टैब ऑन ऑल द एक्टिविटीज. Okay, now while interacting there will be so many farmers who will be doing a particular activity, but they don't know the scientific reason behind that, but they can perform the activity in a very proper, in a very well manner. Okay, but in a manner in which even we cannot do. Okay, so now this is a art. Okay, उनको साइंटिफिक रीजन नहीं पता है, बट दे नो कि मुझे इस चीज के लिए ये करना चाहिए. ओके, यस, कल्टिवेटिंग फॉर देयर नीड्स. ओके, हम क्रॉप का फार्मिंग करते हैं. दिस इज आर्ट. फॉर हुम इट इज साइंस, it's a science for the scientists, for the researchers, for people like us who have done their graduation, post graduation, or have any kind of technical knowledge about agriculture. For us it is a science because we know the reason behind performing a certain activity. Okay, and it's a business. It's a business for all those people who are involved in agriculture and agriculture related products. For example, growing mango is an art, is a science. Okay, but making jam, pickles, okay, now this comes under the business. Okay, क्योंकि आप ना value add कर रहे हो. What you are doing, you are adding the value to a particular product so that it can be sold in the market. Okay, so these are the three aspects of agriculture. One is your art, one is your science, and the other one is your business. Okay, so as an art, it embraces the knowledge of the way to perform the operations in the farm in a skillful manner, but does not necessarily include an understanding of the principles underlying the farm practices. Okay, so ये art कैसे है कि आप यहाँ पे कैसे काम को करोगे वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्यों कर रहे हो, not necessarily that you know them. Okay, as a science, it utilizes all technology developed on scientific principles such as crop breeding. Now there was also a question from cross breeding last time, but now so, another thing, let me tell you here. Okay, let me check also once. Okay, so in your syllabus I don't think you have genetics and plant breeding. Okay, now see, this is something that there will be some questions which are not present in your syllabus and still they will be asked in your exam. Okay, so you can never predict the exam. Okay, if you'll check your syllabus, then there is at all not a single question on crossbreeding, not a single portion in your syllabus which tells about what you have to read about breeding, genetics and all. And in fact it's very very difficult to read about genetics and breeding if you are not from science background or biology or botany background or agriculture background. Okay, next. Yeah. As a science, utilizes all technologies developed on scientific principles such as crop breeding, production techniques, crop protection, economics, etc., to maximize the yield and profit. So this is why we call it science. Okay. Next is as a business. As a business, it aims at a maximum net return through the management of land, labor, water, and capital, employing the knowledge of various sciences for production of food, feed, fiber, and fuel. Okay, so there are so many opportunities that we get from agriculture in case of agro processing industries, in case of even Saurav here is a student of ABM. Okay, now why do we study ABM? We study ABM in order to market the agricultural produces better, to increase the reach of the agricultural produces. Okay, next, for farmers it is the art, and for scientists and students it is a science. Yes. Okay, नेक्स्ट, अभी ग्राउंडनट है. क्रॉस ब्रीडिंग इन प्लांट और एनिमल, नाउ इट डिपेंड्स. अगर लास्ट ईयर का मतलब इफ यू विल चेक योर सिलेबस, then most probably they have asked about crossbreed. The answers should be in the favor of animal, because plant breeding has not been mentioned in your syllabus anywhere. But yes, about there is a mention about the animal breeding. Okay, so yeah, here crossbreeding about the animals may have been asked in your exam. Okay, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, सो अगर मैं आपको आपके सिलेबस दिखाऊं तो द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर. लेट मी आई गेस गाइस एवरीवन हैज द सिलेबस. ओके, सी
uh, agriculture definition, meaning and its branches. Okay, so we will start agronomy tomorrow, so we will be going through this portion today. Okay, so already we saw the definition and meaning. Let's go through the branches of agriculture. What are the different branches of agriculture? Now, talking about the branches of agriculture, we have 7 major branches. Okay, now what are these different branches? Okay, so the first one is agronomy. Okay, second one is horticulture, third one is forestry, fourth one is animal husbandry, fifth fishery science, sixth agricultural engineering, and seven is home science or community science. Okay, so first one is agronomy. What exactly is agronomy? See, the agronomy word has been derived from two Greek words. One is agros and one is nomos. Okay, agros matlab field, nomos ka matlab hai management. Okay, so basically managing the field. Okay, when we are talking about managing the field, it is about managing the field in order to produce a crop. Okay, again, it's pretty simple. So this is what we call agronomy. In case of agronomy, we have so many topics. We have we have to study about irrigation, we have to study about the different crop. The first thing that we are going to study in this week is introduction to agronomy and about different crops. Okay, that is one of the important part that we need to cover. Next, we have horticulture. Okay, talking about horticulture, so again, horticulture deals with your flowers, fruits, vegetables, plantation crops, medicinal plants, all these things. Okay, agronomy is a subject or a branch that deals with the field crops. Field crops, for example, your cereals, fiber crops, sugar crops, pulses, and oil seeds. Okay, horticulture deals with flowers, fruits, then vegetables, plantation crops, medicinal plants, aromatic plants, etc. Okay, horticulture will be dealt by Meenakshi ma'am. Okay, forestry is basically about the forest. Okay, how a forest is grown, what is the use of the forest. Okay, what are forest mensuration? What is forest mensuration? Anyone, any idea what is forest mensuration? Yeah, gardening plants also. Forest mensuration का मतलब क्या है, कोई आइडिया है किसी को? मेंसुरेशन का मतलब पढ़ा होगा ना सभी लोगों ने मैथ्स में, मेजरमेंट्स. यस. ओके, mensuration generally means measurements. So forest measurements, for example, what is the length of a tree, what is the girth of a tree. Okay, so all these things, what is the age of the tree. Okay, so these are all your forest mensurations, all kinds of measurements. Yeah, to measure all the aspects required in forestry. Okay, next we have this portion will be dealt by Hina ma'am. Next, animal husbandry. So what exactly is animal husbandry? Animal husbandry means taking care of animals. Okay. Now the word husband means, husbandry comes from husband. Husband means someone who takes care of. Okay. So this is the literal meaning of husband, someone who takes care of. So someone who takes care of the animal is involved in animal husbandry. ओके, सो हिंदी में इसका मतलब है पशुपालन. ठीक है, जब हम पशुपालन करते हैं ना, हम उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. This portion will again be dealt by Hina ma'am. Fishery science. Okay, fishery science I guess will be dealt by Meenakshi ma'am here. Okay, so about all the aspect, but on YouTube I am covering the YouTube classes. Okay, I guess on Saturday. Okay, on Saturday at 10 a.m. Okay, so talking about fishery science, so it is about the fishes. Okay, now you'll be wondering what exactly we need to read about the fishes. It's not much. ठीक है, बहुत थोड़ा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है. Like what are the different types of fishes, what is the protein content in different fishes. ठीक है, you might have heard about tuna, salmon. Okay, and in India basa. Okay, now these are some of the basa in Hindi is known as pankaj. Okay, so now these are some of the different fishes with a higher protein content. Okay, then you have the rohu, katla, and all. Okay, so you are going to read about their characteristics. Okay, and again, now what kind of fishes are there? There are oceanodromos. Okay, there are different fishes that live in the fresh water. Some live in the brackish water. Some live in the ocean. So you'll also be studying about that part here. And apart from that, now if I'll talk about let's say seawater. Okay, now, the sea has three different layers. One is the layer that is near to the surface. The second one is the middle layer. And the third one is the layer that is close to the bottom of the sea. Now, there are three different types of fishes which generally reside in these layers. Okay, so this is what we call
basic layers of the sea, layers of the ocean, okay, according to the classification of fishes that live in it. Okay, you might have heard pelagic. Okay, this Saturday I took the class. You can go ahead and check. Okay, what are pelagic fishes? Okay, and all. Next, agricultural engineering. Now, agricultural engineering part will be dealt by Meenakshi ma'am here. Okay, so agricultural engineering deals with all kinds of implements that are used in agriculture, like tractor. Okay, then you have harvester. You have here, in case of NABARD's syllabus, pumps are one of the major portion here. Okay, you can go through them. Okay, then we have home science or community science. Okay, now this portion is not present in our syllabus. This is the basic home science to learn how things are prepared and all. Okay, so this is also a part of agriculture. Now, talking about your syllabus, let me just tell you who is going to cover which part. Yes, pelagic, demersal, benthic, new names, but this will be interesting. Okay. बैच के क्लास करने के बाद यूट्यूब क्लास करना होगा. देखो, बैच के क्लास इतने सारे हैं कि आई एम डैम श्योर कि आपको यूट्यूब क्लास करने के लिए टाइम मिलेगा नहीं. व्हाट यू कैन डू इज, मैं आपको इतना बोलूंगा, क्योंकि यार एआरडी ना बहुत बड़ा है. ओके, टुमारो आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ द टाइमिंग्स व्हेन यू ओके, या फिर मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा. ठीक है, उसमें जो जो क्लास होंगे ना, उनको 2x स्पीड पे सिर्फ क्वेश्चन देखना है. ठीक है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर. ओके, इतना करना है. एक क्लास में मैं मुश्किल से 25 क्वेश्चन कवर करता हूँ. ओके, जनरली आई कवर 25 क्वेश्चंस इन वन क्लास, वन यूट्यूब क्लास, एंड इन अ वीक I take 4 YouTube classes related to NABARD. Okay, Monday, Wednesday, Friday, and Saturday at 10 a.m. and every day 9 a.m. current affairs. You can do one thing. You can attend the current affairs class every day 9 a.m. in the morning. Agriculture Adda 24/7 YouTube channel. Okay. Apart from that, if you will see, then so there are other subjects also, but you don't need all the subjects. I will tell which 11 a.m. class timings or which other classes you need. Okay, sir, entomology, pathology, genetic नहीं पढ़ना होगा. Yes, you don't need to study entomology, you don't need to study pathology, you don't need to study genetics and all. Sir, rural development अलग है या मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा आयुष. Okay, अलग तो है बट मैं ही पढ़ाऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट. सो एक बार नजर डाल देते हैं सिलेबस में कि कौन टीचर कौन सा पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपको भी एक क्लैरिटी मिलेगा. देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं. एग्रीकल्चर डेफिनेशन ये तो हमारा हो गया एंड इट्स ब्रांचेस. कुछ था नहीं इसमें, बस एक इंट्रोडक्शन क्लास था. अब ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रोनॉमी. अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम उठा के देखोगे तो एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो कि हर एक एग्जाम में आता है और सबसे ज्यादा वेटेज भी होता है. ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक आपका एग्रोनॉमी है. ओके, मैं डील करूंगा. यहाँ पर बीच में जो सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग एंड सीड विलेज है, ये मीनाक्षी मैम डील करेंगी. ओके, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, ताकि आप बाद में क्रॉस वेरीफाई कर सको कि आपका कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया. एंड अनदर थिंग, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, मैंने हमेशा किया है कि चाहे टीचर मुझे कितना भी पढ़ाए, मैं अपने फैक्ट्स को कभी कभी क्रॉस चेक करता था. ठीक है, और ये भी देखता था क्या जो जो मुझे टॉपिक चाहिए वो टॉपिक्स टीचर ने पढ़ाए हैं या नहीं. एंड आई वुड सजेस्ट यू टू डू द सेम. ठीक है भाई, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कभी गलती हो जाए, हो सकता है कभी कोई पोर्शन मैंने छोड़ दिया. ठीक है, आपको जितने भी नाबार्ड के क्लास मिल रहे हैं, स्पेशली ईएसआई, जीए एंड एआरडी, ठीक है, सिलेबस उठा के रखो, चेक करो कि हर टीचर ने हर पोर्शन पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है. अगर नहीं पढ़ाया है तो अपने टीचर को बताओ, अपने मेंटर्स को बताओ कि मैम या सर ये पोर्शन ना छूट गया है. ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑल द राइट टू गेट ऑल द पोर्शंस कवर्ड. ओके, एंड दैट शुड बी योर प्रायोरिटी एज अ स्टूडेंट. क्लियर? एज अ टीचर ये हमारा जॉब है, ये हमारी प्रायोरिटी है, बट आपकी भी प्रायोरिटी है कि आप ये देखो कि भाई सारा चीज हमें पढ़ाया गया है या नहीं. ओके, कीप अ टैब ऑन इट. ओके, आपको भी फायदा होगा इससे. नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मेटियोरोलॉजी, ये आपको हिना मैम कराएंगी. ठीक है, देन और एआरडी का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से मीनाक्षी मैम की क्लास संडे को भी होगी.
ओके। देन यू हैव द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये वाला मैं कराऊंगा आपको कि मेजर सॉइल टाइप्स इंडिया में क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सॉइल फर्टिलाइजर, सॉइल इरोजन क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, वाटर रिसोर्सेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी और यू कैन कॉल इट वाटर मैनेजमेंट, ये मैं कराऊंगा आपको। फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको मीनाक्षी मैम कराएंगे आई गेस, ओके। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पूरा पोर्शन मीनाक्षी मैम कराएंगे। व्हाट आर फार्म मशीनरी, व्हाट आर फार्म पंप्स, स्टोरेज कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, all these things, okay. Plantation and horticulture, again Meenakshi ma'am will deal with this portion, okay. Animal husbandry, Hina ma'am will deal with this portion, okay. Fisheries, यहाँ पे अगेन फिशरीज यहाँ पे मीनाक्षी मैम डील करेंगी, ठीक है। फॉरेस्ट्री हिना मैम डील करेंगी। नाउ यहाँ से अगेन स्टार्ट होता है अपना पार्ट, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आई विल बी डीलिंग, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज हिना मैम विल बी डीलिंग, ओके। एंड present scenario of Indian agriculture, that is basically your current affairs, I will be dealing with this, and rural development, ठीक है। सो इतना पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेने पड़ेंगे, ओके। सो जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस जब होंगे एंड मैक्सिमम चांसेस यही है कि या तो वो सैटरडे को होंगे या फिर अगर रेगुलर डेज पे हो रहे हैं सो दैट विल बी समवेयर अराउंड द इवनिंग, ठीक है। सो वैसे तो आपका शेड्यूल बहुत ही पैक्ड है, सो आई वुड मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे को ही क्लास करूं क्योंकि सैटरडे को आपका शेड्यूल थोड़ा सा हल्का है, मंडे टू फ्राइडे योर शेड्यूल इज सुपर पैक्ड, ठीक है। तो लेट्स होप कि मतलब जनरली मैंने जो प्लान बनाया है 27th ऑफ अगस्त, 27 भी नहीं 26th ऑफ अगस्त को आपका पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है बिकॉज यू नीड सम टाइम फॉर रिविजन ऑल्सो, ठीक है। 26th ऑफ अगस्त, लेट मी जस्ट टेक अ लुक, या 26th या 27th ऑफ अगस्त को यहाँ पे आपका जो पूरा मतलब मेरा वाला पोर्शन है, ऑलमोस्ट मैंने सभी फैकल्टीज को बोला भी है कि ARD के कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगस्त एंड तक आप कंप्लीट कर दो ताकि जो एक वीक बचेगा एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स विल जस्ट गो थ्रू द सेशन, ओके। सो कल हम लोग एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे और ये एग्रीकल्चर में 2 पन्ने थे तो मैं आपको कल इसका क्लास की PDF क्लास के एंड में मिलेगी, तो मैं कल एग्रोनॉमी के साथ आपको इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर का PDF भी दे दूंगा, ओके। सर जी सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? शशि फिर से वही चीज कर रहे हो, ठीक है भाई। कौन है वो टीचर जो प्रेडिक्ट करता है यार इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा? आप लोग स्टूडेंट हो, डू वन थिंग, गो अहेड, choose any exam of your choice and tell me in the last 2 to 3 years, okay, that questions have been asked from this particular topic. क्यों भागते हो इस चीज के पीछे? मोह माया है ये, ठीक है। सो प्लीज refrain from these kinds of things. These things are just miracles in agriculture. This doesn't happen, okay. So please ऐसी चीजों के पीछे मत भागिए। और इस क्लास में एटलीस्ट जब तक आप मेरे क्लास में हो ना, focus on 100% preparation because that is what I believe, okay. मैंने जिंदगी में सिलेक्टिव नहीं पढ़ा है, ओके। 100% प्रिपेयर करूंगा, एक रात पहले एकदम चिल होके भाई गेम खेलूंगा या तो सोऊंगा, अगले दिन एग्जाम जाऊंगा, बढ़िया करके आऊंगा। दैट्स व्हाट I had always believed in my life and make a note of it. अगर ये करोगे all your exams will be it's like you चुटकी मार के निकलेंगे, बट मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्टिव पढ़ने में ना मेहनत कम लगता है, सब कुछ पढ़ने में मेहनत ज्यादा लगता है। हेलो सर, नाबार्ड के कोर्स में GA एंड ESI भी पढ़ाया जाएगा या सिर्फ ARD? सब कुछ पढ़ाया जाएगा संतोष। अगर आपने मेरिट बैच लिया है तो आपको GA और ESI के क्लासेस भी मिलेंगे, अगर आपने पूरा कोर्स लिया है तो आपको सारा सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। इफ नेसेसरी यू कैन टेक क्लास ऑन संडे, या श्योर दीपांशु। कंप्लीट लेफ्ट वीडियो मिलेगा सर? यस अतुल, पूरा का पूरा वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो। सर व्हेन विल द रिकॉर्डेड ऑफ दिस? जनरली देखो 2 घंटे में रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाता है, लेकिन हम एक 24 आवर्स का टाइम लेके चलते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, बट बहुत रेयर है कि नहीं होता है। जनरली 2 to 2.5 आवर में रिकॉर्ड हो जाता है, ओके। सर बैंक महापैक प्लस महापैक है प्लस वाला, उसमें होगा सब? जी संतोष, उसमें सब कुछ होगा। जिनके पास बैंक महापैक प्लस और एग्रीकल्चर महापैक है उनके पास सारे क्लासेस होंगे। सर जो आपने YouTube पे क्लास ली थी वो ARD इंट्रो ही थी। ऑल्सो प्लीज शेयर अस द प्लेलिस्ट लिंक क्वेश्चंस व्हिच यू आस्क्ड अस टू गो थ्रू एट 2x। यस आई विल डू टुमारो, ठीक है। सोमिल मैं कल आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है।
मैं आप लोगों के साथ जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स है, आई थिंक कि आपको ना, मैं तो पढ़ा रहा हूं लेकिन यू शुड ऑल्सो कीप स्टडिंग दिस, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कल, ठीक है। यस, यू कैन सी द रिकॉर्डेड वीडियोस इन 2x स्पीड। आपका क्लास कंप्लीट होने के बाद जब आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, यू कैन कंप्लीट दोज रिकॉर्डेड वीडियोस इन 2x स्पीड। आई वुड सजेस्ट कि ईएसआई एआरडी को अच्छे से पढ़ो, बाकी के जो जीए को और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट है ना, उसको अगर आप रिकॉर्डेड 2x स्पीड पे भी देखते हो तो चलेगा, क्योंकि मैं आपको एक बार कट ऑफ भी बता दूंगा, कट ऑफ बहुत ही कम गया था, ठीक है। सो डोंट वरी, कट ऑफ जो है बहुत हाई नहीं जाएगा, मतलब क्वालिफाइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई गेस कि अगर आपने आईबीपीएस का एग्जाम पहले दिया है और आपने प्री क्वालिफाई किया है, तो आपका इसका जो क्वालिफाइंग सेक्शन है वो भी आराम से हो जाएगा। अभी कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है हिमांशु, ओके। अगर आज ऑफिस से आपका टेलीग्राम ग्रुप बन के आता है तो मैं आपको कल सभी लोगों को ऐड करा दूंगा। गॉट इट सर। ईएसआई का शेड्यूल एग्जाम के बाद भी चलेगा, तो एग्जाम से पहले तक कंप्लीट करवा सकते हैं क्या? ईएसआई का शेड्यूल एग्जाम के बाद भी चलेगा? नहीं तो आपके सारे सब्जेक्ट एग्जाम से पहले कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। आपके ना सारे सब्जेक्ट जो हैं वो एग्जाम से पहले कंप्लीट हो रहे हैं। फेज 1 के बाद अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आपको क्लास लेके बताऊंगा कि यार एआरडी लिखना कैसा है। 3 थोड़े से क्लास होंगे, आपको एआरडी लिखने का टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपके सारे के सारे चीजें जो है वो फेज 1 से पहले ही कंप्लीट हो जाएंगी, ओके। सर आई हैव क्वालिफाइड एएफओ प्री बट मेंस नहीं हो पाया। डोंट वरी सौरभ, अब की बार जरूर होगा, ठीक है। एएफओ वाले तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं अब की बार। सर इन ईएसआई एंड एआरडी डिस्क्रिप्टिव में भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। नहीं, ऐसा नहीं है। ईएसआई और इंग्लिश में, ईएसआई और एआरडी में जनरली ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए ना तो चलता है, उसको काउंट नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट, हाँ फेज 2 का अगर है तो फेज 2 का अलग से है यार, कंफ्यूज मत हो जाओ। सर जी एफसीआई में यार, शशि यार एफसीआई में यार एग्रीकल्चर का सीरियल्स पढ़ लो, पल्सेस पढ़ लो, एंटोमोलॉजी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, ठीक है। सर मेरी डिग्री कंप्लीट है बट कॉलेज से अगस्त सितंबर में आएगा, मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं या नहीं? आपके डिग्री में 1 जुलाई के पहले का डेट होना चाहिए, ठीक है। आपके डिग्री में अगर 1 जुलाई के बाद का डेट हुआ तो यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। ईएसआई का प्लान चेक किया था, उसमें एग्जाम के बाद तक चल रहा था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मैं चेक कर लेता हूँ, वेट। मैं चेक कर ले रहा हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज। अगर आपके पास 9 बजे टाइम है तो 9 बजे करंट अफेयर्स का क्लास अटेंड करने आ जाना। चैनल का नाम है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। फेज 2 का स्टडी प्लान है यार, कंफ्यूज कर दोगे सब लोग, ठीक है। फेज 1 के ईएसआई के क्लासेस आर एंडिंग ऑन 31st ऑफ अगस्त। क्लियर? सर ईएसआई सितंबर से फेज 2 का शो हो रहा है टिल 6 अक्टूबर, हाउएवर कैन वी गेट गैप ऑफ सितंबर 1 टिल एग्जाम्स टू स्टडी एक्सक्लूसिवली फेज 1? ठीक है, मैं बात करके बता दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको गैप मिल जाए, ओके। सो इट इज अक्टूबर 6, सितंबर 1 से अक्टूबर 6, हाँ ठीक है, ओके। आई विल ट्राई, ओके। चलो तो मिलते हैं फिर कल, ओके। एंड आई गेस कि आपका कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज कल से हम लोग बैक ऑन ट्रैक मतलब ट्रैक पे ही है, ओके। एंड वी विल बी स्टार्टिंग आवर एग्रीकल्चर स्टडीज,
ठीक है. So we'll start with agronomy tomorrow. Hope you enjoyed the class, guys. And at the end of this class, don't forget to give a feedback. In fact, give feedback at the end of each and every class, because that is what we take care of. अगर आप बोल रहे हो कि कोई चीज अच्छा नहीं है, we take care of it seriously. And अगर आप कोई चीज बोलते हो कि कोई चीज अच्छा है, तो फिर हम अपने जो फैकल्टीज है ना, उनको उनकी बड़ाई भी करते हैं कि यार चलो बच्चों ने आपको अच्छा बोला है. ठीक है. बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू टेक फीडबैक फ्रॉम यू. सो डू शेयर योर फीडबैक. ओके. ये क्लास खत्म होते ही आपको फीडबैक मिलेगा. एक तो स्टार का रेटिंग कुछ मिलेगा, और फिर आप यू कैन ऑल्सो कमेंट. ओके. मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, प्लीज फील फ्री टू इन्फॉर्म मी. ठीक है. टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय.